वेलकम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं दी सिक्स्थ न्यूमेरिकल फ्रॉम द एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड कीप इन माइंड ये 7th चैप्टर है आपके 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स पोर्शन का। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ द क्वेश्चन सेज इन ओल्डन डेज व्हाइल लेइंग द रेल्स फॉर ट्रेन्स, ठीक है, हम ट्रेन्स के लिए अब रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। स्मॉल गैप्स यूज्ड टू बी लेफ्ट बिटवीन द रेल सेक्शंस टू अलाउ फॉर थर्मल एक्सपांशन। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन से पॉज लेंगे एंड डायग्राम की तरफ मूव करेंगे क्योंकि आपको एक चीज समझना जरूरी है। सो लेट्स से ऐसे हमारा प्लान है टू ले अ रेलवे ट्रैक एंड यू नो कि हमारे जो रेल्स होते हैं वो एक सेक्शंस में आते हैं ऑफ फिक्स्ड लेंथ एंड हम उन रेल को वन बाय वन अरेंज करते हैं, बट हम उन्हें जॉइंट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि वी कीप सम गैप बिटवीन वन रेल एंड द सेकेंड रेल, एंड दिस गैप इज लेफ्ट बिकॉज वी नो कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है हमारा मटेरियल जो है वो हीट अप हो जाता है एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स रहता नहीं है। विंटर्स में इट कैन गो क्वाइट लो, समर्स में इट कैन गो क्वाइट हाई। सो उसके वजह से थोड़ा गैप रखना इज अ सेफ चॉइस फॉर अस, सो दैट अगर किधर लेंथ ऊपर नीचे हो जाएगा तो इट कैन बी अकोमोडेटेड। सो ऐसे फैशन में हम जो है हमारे रेलवे ट्रैक्स अरेंज करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट बीइंग सेड in the first two lines of the question. Now let's get back to our question. Now let's just suppose the rails are laid at room temperature at 27 degrees Celsius. The maximum temperature in the region is 45 degrees Celsius and the length of each rail section is about 10 meters. Then what should be the gap that must be left given that the coefficient of linear expansion yani alpha is 1.2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin for the material of the railway section. So the second part of the question जो बता रहा है कि हम जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। So let me just pick a color. Okay, so the second part says कि let's say when we are laying the tracks we are working at one temperature T1, ये room temperature है। अब हमें पता है कि T1 पे हमने जब हर एक रेल सेक्शन का लेंथ मेजर किया तो वो हमें आया एज लेट्स से सम लेंथ L1। सो हमारा रेल सेक्शन का लेंथ, एक रेल सेक्शन का लेंथ है L1 व्हेन द टेम्परेचर इज T1। बट अब हमारा रीजन जो है उधर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, एंड लेट्स से इन द पीक समर सीजन इसका जो रीजन में जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम अचीव होता है एंड लेट्स से दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर T2। अब बिकॉज ऑफ दिस राइज इन टेम्परेचर ऑब्वियस है कि आर रेलवे ट्रैक वुड गेट सम इलोंगेशन और अंडरगो सम लीनियर एक्सपेंशन। सो अब उसकी लेंथ L1 तो रहेगी नहीं, इट विल गेट चेंज टू L2। So L2 is the length of the railway track when the temperature is T2, whereas L1 is the length of our railway track when the temperature is T1. Okay, T1 is room temperature, T2 is the max temperature. Now the question says कि कितना gap रखना चाहिए between the two rails. So आप ये gap देख रहे हो ना? So the question wants to know कि कितना gap रखना चाहिए between the two railway section सच दैट कि मैक्सिमम डे पे होने वाला जो एक्सपांशन है उसको भी हम जो है काउंटर कर जाए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो यू कैन सी दैट कि अगर मैक्स टेम्परेचर के टाइम पे लेंथ L2 है और जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है तब लेंथ L1 है, सो ऑब्वियसली गैप शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू लेंथ्स। सो L2 minus L1 is what we have to find in this question. So now that we have a better understanding of our question using this diagram, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे लगता है कि काफी इजी पार्ट हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप हम करेंगे दैट इज टू राइट ऑल द गिवन डेटा गिवन इन आवर क्वेश्चन। सो द फर्स्ट गिवन क्वांटिटी दैट्स बीन गिवन टू अस is the temperature at which the tracks were laid. So that temperature, let me call it as T1, जो कि हमारा initial temperature भी हम बता सकते हैं, and this is said to be 27 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर था जिस तक काम चल रहा था, एंड इस टेम्परेचर पे जब हमने हमारे रेलवे सेक्शंस के लेंथ मेजर किया था एक सेक्शन का, तो दैट लेंथ केम आउट टू बी, लेट मी डिनोट इट एज L1 as 10 meters, ठीक है। L1 is the length of the track when it was measured at temperature T1. सिमिलरली हमें बताया गया है कि हमारे पूरे रीजन में मैक्स टेम्परेचर जो जा सकता है
that is 45 degrees Celsius. So let me call that as a T2. So temperature that will be the final temperature. तो उसे हम लिखेंगे as T2 which is equal to 45 degrees Celsius. And the third quantity जो हमें दिया है that is the coefficient of linear expansion, हम alpha से denote करेंगे, and इसका quantity is said to be 1.2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin. That's it. इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में as such given नहीं है. So now let's move on to the next part of our solution, that is the to find section. हमें पता है हमें क्या ढूंढना है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन कर दिया है, हमें ढूंढना है the gap that must be left. Okay, so gap that must be left between the two railway sections. So the gap that must be left, and we know confidently that this gap is equivalent to the differences between the maximum length possible and the current length. So L2 minus L1 हमें ढूंढना है, इससे हमें गैप का अंदाजा हो जाएगा. And let me tell this that कि ये quantity हमें unknown है. So this is our to find section. Now let's try to figure out what sort of formulas हम use कर सकते हैं to find this gap. Now हमारे पास given data में अल्फा है, हमारे पास दो टेम्परेचर्स है, हमारे पास कुछ लेंथ्स है. तो एक फॉर्मूला जो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि शायद यूज हो सकता है, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द coefficient of linear expansion, where alpha is equal to delta L, that is change in the length upon original length L1 upon into delta T, that is change in temperature. So इस केस में delta L can be written as L2 and L1 if L2 is final length and L1 is the initial length. L1 is initial length and temperature difference will be T2 minus T1, where T2 is the final length and T1 is the initial length. Now हमें पता है, हमसे पूछा है to find the difference between the lengths. So L2 minus L1 is what we have to find. And this formula में अगर हम थोड़े changes कर देंगे, अगर इस formula को हम थोड़ा modify या rearrange कर देंगे, so जो हम second step में करेंगे, so इससे we can say that therefore L2 minus L1 must be alpha times L1 into T2 minus T1. Okay, a small rearrangement of the first formula gives us the second formula. एंड यही तो हमें फाइंड करना है, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लेंथ्स. एंड हमारे पास अल्फा का वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर के वैल्यूज गिवन है एंड L1 भी गिवन है. सो अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन विल नाउ गिव अस द वैल्यू व्हिच वी वर लुकिंग फॉर. सो अब हमारा जो सोल्यूशन है वो काफी इजी हो गया है, बस सब्स्टिट्यूशन करना है. सो लेट मी से फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 2, so from formula number 2 which gives us the value for the difference in length, so L2 minus L1 is equal to value of alpha जो हमने given है, that is 1.2 into 10 raised to minus 5. So let me write it as 1.2 into 10 raised to minus 5. L1 is set to be 10 and T2 का value is set to be 45 and T1 is 27 degree Celsius. Now let's try to simplify this. So 1.2 into 10 raised to minus 5 into 10 gives us 12 into 10 raised to minus 5. So 1.2 into 10 gives us 12 and 45 minus 27 gives us 18. Okay, so if we were to solve this, तो हमें जो है आंसर आ जाएगा as 12 into 18 gives us 216 into 10 raised to minus 5, which can be written as 2.16 into 10 raised to minus 3 meters, and which can also be now represented in a little bit more better units. So 10 raised to minus 3 meters is 1 millimeter. So the length difference, so difference between the maximum length and the current length is 2.16 millimeter, and this also marks the length of the gap. So if a gap of 2.16 millimeter is left between each rail section, तो हम thermal expansion के लिए हमने वो केस हैंडल कर दिया होगा. So the length of the gap should be 2.16 millimeters. And that's it. This was our final statement. If you want the PDF of this solution, make sure to check out the description. Have a nice day.